जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस द्वारकादास खेतान, द्वारकादास खेतान 1961 सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। देखिए section 30 we have discussed that a minor cannot become a partner of that partnership firm. This should be very clear. Minor कभी partnership firm का partner नहीं बन सकता. Then what is the relevance of section 30 then? Section 30 specifically gives some kind of relaxation to the minor in form of that he can be admitted to the benefits of the partnership by contributing some share into the partnership firm, but he cannot be personally liable. He cannot be personally liable towards the partnership firm, because if you making the minor personally liable, that itself means that you are enforcing a contract against the minor, which is prohibited, which is not permissible as per the Indian Contract Act section 10, section 11. Otherwise क्या होता है? There is a rule under contract that a minor cannot be and cannot become a partner of any partnership firm, or a minor is totally incompetent to enter into a contract. And if you make minor as a partner, then it itself means that you are also enforcing the liabilities against the minor, which is not possible. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस द्वारकादास खेतान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है that a minor cannot become a partner of a partnership firm, but there is some concession, relaxation has been given under section 30 to a minor that he can be admitted to the benefits of the partnership firm only, but he cannot in any case become a partner of a partnership firm. Cannot, because he is totally incompetent. This was laid down by the Supreme Court in this case 1961 कि भाई माइनर नहीं बन सकता पार्टनर, हाँ वो बेनिफिट जरूर ले सकता है, जो हमने सेक्शन 30 में पढ़ा, ये हम लोगों ने देखा है. ठीक है, चलिए. अच्छा, रिगार्डिंग सेक्शन 30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोगों ने नोट्स नहीं लिखे थे या लिख लिए थे? नहीं लिखे थे. अच्छा, नोट्स आपके लास्ट नोट्स कहां तक हुए थे बताइए? कौन से सेक्शन के हुए थे नोट्स बताइएगा? व्हाट वाज द लास्ट सेक्शन, मतलब कि लास्ट नोट्स जो आपने लिखे थे पार्टनरशिप में, मतलब 28. हाँ, 29 आपको पढ़ना नहीं है, 30 मतलब 30 से हम लोग को नोट स्टार्ट करने हैं, फिर हम लोग आज के डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सब देखेंगे आज हम लोग धीरे धीरे करके. ठीक है, चलिए पहले हम लोग को लिखेंगे नोट्स. नोट्स एंड नोट्स. जस्ट गिव मी अ सेकंड. वेयर आर द नोट्स? हाँ, अच्छा चलिए, आप लोग टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे. ये बताइए कि आपका टारगेटेड स्टेट कौन सा है, जिसमें आप सबसे पहले, होता है ना हर किसी का टारगेट स्टेट कि हाँ इस स्टेट में मुझे सिलेक्शन चाहिए. कौन सा स्टेट है आप लोग का? राजस्थान एंड हरियाणा. आपका हरियाणा एंड राजस्थान. एंड वेयर फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? रोहतक, मतलब हरियाणा से. ओके ओके ओके, डेट मीन हरियाणा तो है ही आपका मेन तो हरियाणा ही है फिर, होम स्टेट. ठीक है, एंड राजस्थान. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके. चलिए, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान. हाँ देखिए, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान के क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको. हरियाणा के क्वेश्चन थोड़े दिल्ली वाले स्केल पे दिखते हैं, मतलब दिल्ली वाले पैटर्न पे, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, जनरली. ठीक है, राजस्थान में जहां तक डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इसलिए हमें क्लरिकल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. ठीक है, गौरंग आपके लिए भी. हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, वहां पे बड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, चलिए चलिए चलिए. Now write down the question. What are the rights and liabilities? What are the rights and liabilities
What are the rights and liabilities of minor admitted to the benefits of a partnership firm. Admitted to the benefits of a partnership firm. Admitted to the benefits of a partnership firm. Now please write down. The relationship of partners arises out of contract and as per section 10 and 11 as per section 10 and 11 of Contract Act, as per section 10 and 11 of Contract Act. A minor is incompetent to contract, comma, the IPA, let me Indian Partnership Act, is also a part of the ICA. It also is also a part of the ICA. Indian Contract Act is also a part of the ICA. Therefore, there cannot be a contract of partnership. There cannot be a contract of partnership with a minor. There cannot be a contract of partnership with a minor. Full stop. Change the para. Write down. Section 30 of IPA. Section 30 of IPA talks about the rights and liabilities of a minor, the rights and liabilities of a minor admitted to the benefits of partnership firm. Admitted to the benefits of partnership firm. First point. आज पीयूष गुप्ता, क्षितिज राणा, अनुष्का सब कहां गायब है भाई? क्लास मिस नहीं करनी होती है. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. माइनर हैज अ राइट टू रिसीव the agreed share of property and profits. We'll stop. Second point. He can also have access to the account books. He can also have access
to the account books, of the firm. He can also have access to the account books of the firm. Can have access to the account books of the firm. Next point. His share is liable. His share is liable for the acts of firm. His share is liable for the acts of firm. But he is not personally liable. He is not personally liable. Next point. After attaining majority, he can decide within 6 months from the date of attaining majority, within 6 months from the date of attaining majority, whether he wants to be a partner, of the firm, or to leave the firm, Next point. If he fails to give notice, comma, he automatically becomes partner. After the expiry of 6 months. Next point. If he decides to be a partner, comma, he becomes liable as partner. He become liable as partner for the acts of the firm, since he was first admitted to the benefits of partnership firm. ब्रैकेट में डालना रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी जो मैंने आपको बताई थी, रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी, ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट पॉइंट. If he elects not to become partner, not to become partner, then his rights and liabilities will be those of minor, will be debt of minor
up to the date will be date of minor, up to the date of public notice, up to the date of public notice, and after the date of notice, his share will not be liable, his share will not be liable, his share will not be liable for the acts of firm, his share will not be liable for the acts of firm, for the acts of firm, his share will not be liable for the acts of firm. अब ये वाला केस लॉ का नाम लिखिए, ये जो ऊपर लिखा है इसका नाम लिखिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस द्वारकादास खेतान. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस द्वारकादास खेतान. इसमें लिखिएगा, इन दिस केस the Supreme Court held that, in this case the Supreme Court held that a minor cannot become a full-fledged partner, cannot become a full-fledged partner of a partnership firm, cannot become a full-fledged partner of a partnership firm, full stop, and section 30 only gives the relaxation, only gives the relaxation that a minor can be admitted, to the benefits of, the existing partnership firm, to the benefits of the existing partnership firm. इसमें पार्टनरशिप फॉर्म. एक और केस लिख लीजिए, चेंज द पैरा, राइट डाउन. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शाह मोहन दास 1966 सुप्रीम कोर्ट. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शाह मोहन दास 1966 सुप्रीम कोर्ट. इसमें लिखेगा, द कोर्ट सेड दैट if a partnership deed tries to make a minor a full-fledged partner, comma, that partnership deed will be considered void. That partnership deed will be considered void. That partnership deed will be considered void. वो पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगी? void, अगर जिसने माइनर को पार्टनर बना दिया तो. चलिए अब चलेंगे आगे. Subscribe for more content.